Hello students, myself Santoshi Sutar, your history and geography teacher, and today we are going to start with history subject with chapter Nationalism in India. We are going to cover our first topic, which includes subtopics such as First World War, Khilafat movement and non-cooperation movement. I want you all to make notes of a content as you guys can see on your screen in your notebook, and please do your homework, and your homework is a questions which is written with red pen. Okay, so let's start with the topic. Thank you. Okay, so nationalism in India. Okay, so the word nationalism means pride for a country, love and affection towards our country. Okay, so एक देशभक्ति की भावना, that is a nationalism in India. Okay, so how it formed in India, nationalism कैसे आया. Okay, so in this chapter we are going to study all this stuff. Okay, so for the first topic we are going to study about the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. Okay, so what happened in the First World War, what is Khilafat movement and what is non-cooperation movement. Okay, so let's come to the First World War. Okay, so First World War, which was started in the year 1914 and ended in the year 1918. Okay, so First World War gave so much of damages, there was so much of issues, there was so much of destructions during the First World War. Okay, so there was economic, political, social problems. Okay, so there was two basic situations at that time, that is the economic situation, because the economy of various countries were very poor, very down. Political situation, because there were no any democratic rule or some government rules also. Okay, so there was no specific ruling issues or ruling system at that time. Okay, so now what happened during the wars? Okay, so war leads to various circumstances, various problems, various situations. Okay, there was a situation where there was a huge increase in the defense expenditure. Okay, so defense expenditure like war के लिए expend करना, to buy tanks, to buy guns, to buy war materials. Okay, to buy war shoes, to buy whatever needed in the war. Okay, so that is all about defense expenditure. Okay, so there was huge increase in defense expenditure. All that expenditure was led by the loans. Okay, so war loans which was took by various European countries, various countries which was engaged in the First World War. Okay, so they took all these war loans from another countries, different countries. Okay, so all this happened. After that, increase in taxes were increased, custom duties were raised and income tax was introduced. Custom duties, what do you mean by custom duties? Custom duties are duties on imports and exports. Custom duties are specifically duties on imports and export. What you guys import, what you guys export, you pay some duties which is named as a custom duties. Okay, so custom duties were raised. Okay, and there was a introduction of income tax. Okay, now prices increased, many of the prices of foods, prices of some needy things. Okay, that increased, which got double between the year 1913 and 1918. Guys, it is 1913. Okay, so 1913 and 1918, villages were called upon to supply soldiers. Many villages were called upon to supply soldiers. Okay, so there was a forced recruitment in the small villages, where small villages were going to forcefully recruited by the soldiers. Okay, after that, in the year 1918 and 1921, there was a crop failure in many parts of India, which caused shortage of food. Crop failure due to the some epidemics, some famines. Okay, famines, as you all know what it is. Okay, so famines, epidemic named as influenza, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. व्हाट इज़ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक? जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है कि एक बीमारी आ गई है, सब लोग को बच के रहना है, वैसे वो टाइम पे क्या था, एक इन्फ्लुएंजा करके एक एपिडेमिक था, उसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गया था. ओके, सो विच कॉज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, एंड इन द ईयर 1921 12 to 13 million people perished due to famines and epidemic. Okay, 12 to 13 million were dead due to famines and epidemic. Okay, so इसकी वजह से 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे. Okay, this was all about First World War. Okay, hope I am not so fast
and if you guys understood, and if you guys have any doubt, you can write in the comment box. Okay, for sure I'll respond your comments. Thank you. Okay, so you can have this question such as what were the social and political or economical impact of First World War on India, or what were the impact of First World War on India. Both are the different questions, but you guys can write same answer. Okay, so this all happened in the First World War. आफ्टर दैट देयर वाज अ आइडिया ऑफ सत्याग्रह. आप लोगों ने बहुत फिफ्थ स्टैंडर्ड से सुना होगा व्हाट इज सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स गांधी जी. ओके, नो इट्स नॉट लाइक दैट. सत्याग्रह मीन्स असत्य, truth. Okay, so what do you mean by satyagraha? Satyagraha is what? A power of truth and need to search for a truth. Satyagraha means power of truth, like सच्चाई के लिए लड़ना. Okay, और सच्चाई पता करना कि सच्चाई है क्या, that is satyagraha. Okay, it is explained as what Gandhi ji explained it as. It is explained as if your cause was true. ओके, सो अगर आपकी वजह, आपका कॉज, जो भी आपका है, रीज़न है, वो ट्रू है. ओके, एंड योर स्ट्रगल इज़ अगेंस्ट इनजस्टिस. योर स्ट्रगल इज़ अगेंस्ट इनजस्टिस. कुछ गलत चीज़ के वजह से, आपका गलत चीज़ के ऊपर आपका स्ट्रगल है, देन देर इज़ नो नीड ऑफ एनी फिजिकल फोर्स टू फाइट. ओके, सो कोई भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं. लाइक यू डोंट नीड एनी गन्स, एनी तलवार, एनी स्वॉर्ड्स, एनी नाइफ्स, वॉट एवर. ओके, सो कुछ हार्मफुल मटेरियल्स आपको कुछ नहीं चाहिए. यू हैव टू स्ट्रगल विद दिस, यू हैव टू फाइट विद दिस विद नॉन वायलेंस. ओके, सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस मीन्स आपको कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, मारा मारी नहीं करनी है, बट पीसफुली यू हैव टू स्ट्रगल. Okay, you have to explain them your truth, that you are right and they are wrong. You have to explain it in a peaceful manner. This is all about satyagraha. What is satyagraha and why this is. Okay, so if your cause was true, if your struggle is against injustice, then physical forces were not necessary to fight, and satyagrahi can win the battle through non violence. Okay, so इस तरह non violence ज़्यादा ज़रूरी है. Okay. Okay, so another question number 2, that is what is satyagraha. Okay, so satyagraha, as I explained what is satyagraha, you can write this in a short 2 to 3 points. Okay, so what happened next is, after arriving in India, when Gandhiji arrived in India from South Africa, what he did is Gandhiji successfully organized satyagraha movement. Okay, so he organized 3 satyagraha movements. Okay, so which were the 3 satyagraha movement is, in the year 1916 he organized a movement in Champaran in Bihar. Okay, to struggle against a oppressive plantation system. Okay, so there was a oppressive plantation system जहाँ पे ज़बरदस्ती फार्मर्स को बोला जाता था कि आप ये प्लांटिंग करो, वो प्लांटिंग करो. ओके, सो ये क्रॉप से ग्रो करो, ऐसा. सो एट चंपारण इन बिहार ही स्ट्रगल्ड, और ही raised a movement, organized a movement against this. Okay, after that, in the year 1917, in Kheda district of Gujarat, to support peasants affected by the crop failure and plague epidemic. So there was another epidemic, that is plague. Okay, so जो peasants crop failure से affected थे, crop failure, there was a crop failure, so shortage of food, they were not going to pay, they were not able to pay revenues to the landowners वगैरह. Okay, so about all this thing he organized a satyagraha against it. After Kheda district of Gujarat, he went to Ahmedabad in the year 1918 to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. Cotton mill workers because they were not getting proper wages, proper working hours. Working hours मतलब उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था, but they'll get payment very less. Okay, so this was the issue. So Gandhiji organized movement for this. Okay, so these 3 movements, 1916 at Champaran, 1917 at Kheda district, and 1918 at Ahmedabad. So these are the 3 movements which is very important for your 1 mark questions, MCQ. So you may ask for 1 mark questions or map work. Okay, so most important map works also. Okay, so now the question may ask is, which 3 satyagrahas were led by Gandhiji. Okay, so which 3 satyagrahas were led by Gandhiji. Okay, so specifically which 3 simultaneous satyagraha. Okay, so 16, 17 and 18. Okay, so these things. Okay, after these 3 satyagraha, successful satyagraha, what Gandhiji thought was about a
nationwide satyagrah, to launch nationwide satyagrah. So in the year 1919, Gandhiji decided to launch a nationwide satyagrah against proposed Rowlatt Act 1919. Okay, so now what was Rowlatt Act? Okay, so Rowlatt Act was one of the Britishers Act, which means what the Rowlatt Act mean was to give powers to government. Okay, government will get all the powers, and what that power means is to repress the political activities of other people. Okay, so another people, okay, rest of the government, okay, government को छोड़ के दूसरे लोग, okay, they can't form any political activities, they can't perform any political activities. Okay, so this was the power of Rowlatt Act. Okay, so what happened to Rowlatt Act? Rowlatt Act was hurriedly passed through Imperial Legislative Council, which is a council like our Lok Sabha and Rajya Sabha, जहाँ पे acts pass होते हैं, rules and regulations बनते हैं. Okay, वैसे there was a Imperial Legislative Council. So Rowlatt Act was passed hurriedly there, डिस्पाइट ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स. ओके, सो जो काउंसिल में इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसका अपोजिशन किया. ओके, दे अपोज दिस. हाँ, बट डिस्पाइट ऑफ अपोजिशन द एक्ट वाज सक्सेसफुली पास्ड. ओके, सो गांधी जी वांट्स अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस एक्ट. ओके, so now Gandhiji wanted non-violent movement against this unjust law. Okay, what he wanted is non-violent movement. Okay, so he organized a hartal on 6th April. Okay, so what happened in the hartal में क्या हुआ था, उसके इफेक्ट्स क्या थे हड़ताल होने के बाद. Okay, so rallies were organized, many rallies were organized, as you all know what is rallies. Okay, workers went on strikes in railway workshops. जो भी रेलवे वर्कशॉप्स, रेलवे के पास शॉप्स थे, वहाँ से वर्कर्स क्या हो गए, स्ट्राइक पे चले गए. जो भी गवर्नमेंट के अंडर जो भी चीज़ें थे, जो भी लोग थे, वो लोग कहाँ गए, स्ट्राइक्स पे चले गए थे. शॉप्स वेर क्लोज डाउन, मेनी ऑफ द शॉप्स वेर क्लोज डाउन. लोकल लीडर्स वेर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर. अमृतसर में जो भी लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स इन द सेंस जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, जो छोटा मोटा स्ट्रगल्स करते थे. ओके, जो छोटे छोटे पार्टीज़ फॉर्म किए थे, वो लोगों को क्या किया था, उठा दिया इन द सेंस पिक्ड अप मीन्स व्हाट, arrested. Okay, so local leaders were arrested. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. Mahatma Gandhi was not allowed to enter Delhi. महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करना अलाउ ही नहीं था. ओके, सो दिस ऑल हैपेंड आफ्टर द रॉलट एक्ट. ओके, सो रॉलट एक्ट जब इम्पोज हुआ, उसके बाद जब हड़ताल ऑर्गेनाइज की 6 अप्रैल 1919 को, तभी क्या हो गया, ये सारे चीज़ें आए. रैलीज वर ऑर्गेनाइज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, शॉप्स वर क्लोज, लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर, एंड महात्मा गांधी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली. ओके, I hope you are getting all the points and you are understanding all these things. Okay, now about martial law. Okay, so martial law was imposed in Amritsar and General Dyer took command. Okay, so what is martial law? Martial law होता क्या है? Martial law is what, there was a rule that more than 2 people can't gather at one place. कोई एक जगह पे 2 से ज़्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते. लाइक आप कोई मीटिंग नहीं कंडक्ट कर सकते, आप लोगों को साथ में नहीं ला सकते, कोई ऐसा पब्लिक फेस्टिवल कुछ नहीं कर सकते. दिस ऑल हैपेंड एंड द लॉ नेम्ड एज मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर. ओके, एंड आप लोग कोई वेपन भी अपने साथ नहीं रख सकते. ओके, यू कैंट कैरी अ वेपन, क्या. ओके, ऑल दिस स्टफ. सो जनरल डायर टुक अ कमांड मीन्स जनरल डायर, हु वाज जनरल डायर, अ ब्रिटिश ऑफिसर हु टुक कमांड. ओके, सो हु वाज कमांडिंग इन अमृतसर. ओके, जो अमृतसर को देख रहा था, अमृतसर के बारे में सब ध्यान रख रहा था, एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय हिमसेल्फ. ओके, okay, so Jallianwala Bagh incidents took place on 13th April 1919. What happened here was large number of crowd were gathered in the ground of Jallianwala Bagh. The crowd was there to protest against the government, and some crowd was there to attend the annual Baisakhi फेयर. ओके, सो हर साल वहाँ पे एक बैसाखी मेला होता है वो बाग में, वो ग्राउंड पे. ओके, सो देयर वर द पीपल हु केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आ रहे थे. और कुछ लोग थे जो वहाँ पे बैसाखी का फेयर एंजॉय करने आ रहे थे. ओके, सो बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, देयर वर द पीपल हु वर आउटसाइड फ्रॉम द सिटी. ओके, बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ सिटी, मेनी विलेजेस वेयर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ. उनको पता नहीं था मार्शल लॉ इम्पोज्ड है कि हमें गैदर नहीं होना है. सो दे वर अनअवेयर ऑफ इट. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, एज पीपल वर गैदर्ड देयर, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया. जो वो ग्राउंड था, जो जलियांवाला बाग था, जनरल डायर एंटर्ड देयर. ही ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स.
ओके जितने भी वहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स थे उसने वो ब्लॉक कर दिया एंड देयर वाज ओपन फायर ऑन द ग्राउंड पे क्या किया उसने ओपन फायर किया. ओपन फायर मीन्स व्हाट? Openly he fired on the crowd, okay, and then he killed hundreds of people. Okay, so he commanded open fire and he killed lots of people. Okay, his object was to produce a moral effect and feeling of terror and awe. Okay, so उसका मेन मोटो क्या था कि लोगों के मन में एक खौफ आए, एक डर आए. ओके, टू फीलिंग ऑफ टेरर. ओके, सो लोगों को डराने के लिए वगैरह उसने क्या किया, अगर आप लोग एक साथ आओगे तो हम लोग इस हद तक जा सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल डायर. ओके, सो व्हाट हैपेंड 13 April crowd was gathered to protest against the government to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many people were not aware of martial law. And what happened up next is General Dyer entered, blocked the exit points, opened fire in the crowd, killing hundreds of people. The object was to produce a moral effect and feeling of terror. Okay, so this all happened. So this all happened properly after Rowlatt Act. Okay, so you guys can have a question such as what was the Rowlatt Act, एक्सप्लेन द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट क्या था, कैसे था, एंड गांधी जी ने उसके ऊपर क्या किया वो. एंड यू कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक अ नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स. ओके, सो इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग जो हुआ, ओके, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. द सिचुएशन, जनरल डायर ने इतना सब कुछ किया, सो उसके बाद पब्लिक सुन के थोड़ी लेगी. ओके, सो व्हाट हैपेंड इज एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, many of the crowds took the streets. Okay, crowd सारे streets पे आ गए थे. there were strikes, clashes with police के साथ झगड़ा कर रहे थे, पुलिस के साथ फाइट कर रहे थे. attacks on government buildings means courts, schools, banks, police stations, ये सब कुछ. so ये government buildings पे क्या होने लगे, attacks होने लगे by the local public. okay, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रुटैलिटी. ये सब कुछ होने के बाद अभी गवर्नमेंट चुप थोड़ी बैठेगी, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्स करेगी. सो हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद वेरी ब्रुटैलिटी. सो गवर्नमेंट ह्यूमिलेट एंड टेरराइज द पीपल. लोगों को डराने लगे, लोगों को मारने पीटने लगे. दिस ऑल हैपेंड. सत्याग्रहीज वेयर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड. तो जो सत्याग्रहीज थे, जो अगेंस्ट मूवमेंट पे थे, जो लोग सब क्राउड्स वगैरह ये काम कर रहे थे, वो लोगों को क्या कराया गया था, दे वर फोर्सफुली rubbing their noses on the ground. They were crawling on the street पे crawl कर रहे थे वो लोग. okay, they were doing सलाम मतलब कोई भी अगर ब्रिटिश ऑफिसर आए तो उनको सलाम करने का. and many villages were bombed. villages में बॉम्ब वगैरह डाल दिए. जहाँ पे हालत बहुत बुरी हो रही थी, वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, बॉम्ब डाल रहे थे वगैरह. okay, so they were destroying villages. okay, this all happened. and after seeing all this stuff, all this clashes, strikes and violence, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. उन्होंने जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने वो क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया. ओके, सो यू गाइस हैव अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स. ओके, सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू खिलाफत मूवमेंट. Okay, so now Gandhi ji felt a need for Khilafat movement was to unite Hindus and Muslims. Okay, so he wants Hindus and Muslims together because as India was with Pakistan, there was no partition of India and Pakistan, so there were Muslim communities also at our place. Okay, so as we want freedom, we have to unite with each other, we have to cooperate with each other. So what Gandhiji want was Muslims and Hindus together. Okay, so there was a need of movement to unite Hindus and Muslims. Okay, so the Khilafat movement, which was started for unification of Hindus and Muslims, how it was started was first when First World War ended, there was a defeat of Ottoman Turks. Okay, Ottoman Turks who was defeated in the First World War, and after that what they planned was there was a rumors that the Khalifa, who was the spiritual head of Islam, okay, so Khalifa, the spiritual head of Islam, who is putting a harsh peace treaty on the Ottoman Turks, the Turkey people, he was going to
impose harsh peace treaty. Okay, so to defend the Khalifa, the spiritual head of Islam, the committee was started, which is Khilafat Committee, formed in the Bombay, March 19. Okay, 1919. The committee was formed, which was controlled by the two brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali. They were Muslim leaders. Okay, this was controlled by Muhammad Ali and Shaukat Ali with Gandhiji. Okay, with Gandhiji in the sense they collaborate with Gandhiji, as Gandhiji explained them about the idea कि चलो हम लोग को ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, we have to unite Hindus and Muslims. So the idea of Khalifa, the idea of Khilafat is very nice. So he named the movement as a Khilafat movement. After discussing with Muhammad Ali and Shaukat Ali, Gandhiji discussed all about the unification of Hindus and Muslims. Okay, so this was about Khilafat movement. What was how Khilafat movement was formed, why Khilafat movement was organized. Okay, so Hindus and Muslims ka unification was, there was a need of unification. Okay, so Khilafat committee was formed. Where it was formed? In Bombay, March 1919. By whom? Muhammad Ali and Shaukat Ali. With Gandhiji, they discussed about the unification of Hindus and Muslims. Okay, so after knowing about Khalifa, after knowing about Khilafat movement, what Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims together with Hindus. Okay, Gandhiji, what he saw, to bring Muslims together with Hindus. So September 1920 at Calcutta Congress session, what he did is he convinced the other leaders to start non-cooperation movement of Khilafat as well as Swaraj. What he explained is, to Muslims what he explained that कि तुम्हारे ऊपर harsh treaty लगने वाला है. Okay, so you are struggling against your Khalifa, against your spiritual head. Okay, so the name is Khilafat, so you are struggling about Khilafat, and about Hindus you are struggling about Swaraj. Okay, so both came together, and the movement was named as a Khilafat movement, which was properly it was a non-cooperation movement against the British. Okay, so after this there was a rise of non-cooperation movement, like you do not have to cooperate with British rule. Okay, so for example, as you all know, in the movie Lagan, okay, you guys have saw Lagan movie. Okay, so Lagan movie में क्या होता है, like the Britishers came. Okay, so there was a ruler, a king. Okay, so a king was a Britisher or Indian? Obviously Indian. Okay, so the British people, the British के ऑफिसर्स वगैरह, दे वर लिविंग इन द राजमहल ऑफ किंग. ओके, सो अगर किंग ने उनको अलाउ ही नहीं किया रहता है कि आप हमारे महल में नहीं रह सकते, तो वो लोग क्या कोऑपरेट, तो वो लोग क्या आते, हाँ, अगर किंग ने कोऑपरेट नहीं किया होता. ओके, सो मेनी ऑफ हिंदूज, मेनी ऑफ द इंडियन पीपल कोऑपरेटेड ब्रिटिश पीपल. ओके, सो ब्रिटिश पीपल के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया, एंड विद दैट कोऑपरेशन ब्रिटिश गॉट पावर. ओके, सो उनको जैसे पावर मिला, उसकी वजह से उनसे क्या हुआ, उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा पावरफुल बने, और ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो लोगों ने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट किए. इंडियंस को ब्रिटिशर्स में इंटरेस्ट क्यों था? ओके, सो लगान मूवी में वो जो किंग था, वो जो राजा था, महाराज था, उसको क्यों इंटरेस्ट था ब्रिटिश के रूल में? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या प्लान किया, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट्स बाहर सेल करवाएंगे, हमारे कंट्री में सेल करवाएंगे, या फिर हमारे कंट्री से कुछ प्रोडक्ट्स आपको देंगे. ओके, सो कुछ टैक्सेस के बारे में भी वगैरह, ये सब कुछ. सो ये सब चीज़ों की वजह से इंडियंस लोग लालची बन के, दे वर ग्रीडी, एक्चुअली इंडियन पीपल वर ग्रीडी. ओके, सो वो लोग ने लालच में आके उन्होंने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट किया. ओके, सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय गांधी जी इन हिज बुक हिंद स्वराज, विच वाज रिटन इन द ईयर 1909. What he thought was British rule is because of cooperation of Indians. अगर Indians cooperate नहीं करते तो British rule कभी होता ही नहीं. Okay, so non-cooperation movement, that is NCM. Okay, don't get confused. NCM, that is non-cooperation movement, began with surrender of titles that government awarded. Okay, so non-cooperation movement, like हमें cooperate नहीं करना है. Okay, so there were the titles awarded by the government, titles such as you are a officer, you are a council minister, such as these are the titles given by to the Indians. Okay, so you have to surrender that. Surrender मतलब वो दे देना उनको वापस, हमें नहीं चाहिए. Okay, you guys have to boycott civil services, army, police, courts, legislative councils, etc. जो भी वकील है कोर्ट में, जो इंडियंस है, उनको उनका कोर्ट छोड़ना चाहिए. जो ब्रिटिश कोर्ट है वो, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो काउंसिल में
मेंबर्स है, जैसे राज्यसभा लोकसभा में मेंबर्स रहते हैं वो, ओके। सो ऑल दैट स्टफ, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, स्कूल्स जो स्टूडेंट्स वगैरह स्कूल्स जाते हैं या फिर स्कूल्स में जो टीचर्स वगैरह जाते हैं उनको भी वो छोड़ देना है। फॉरेन गुड्स, वी शुड नॉट यूज़ फॉरेन गुड्स, वी शुड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। ये सब कुछ आइडिया क्या था गांधी जी के, ओके। So this was about non-cooperation movement, what Gandhiji wants in non-cooperation movement, okay. ओके, सो एज दिस ऑल हैपेंड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने बहुत आइडियाज़ वगैरह लगाया। एट द सेम टाइम देयर वाज मेनी रायट्स, मेनी फाइट्स, मेनी स्मॉल फाइट्स इन कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस, ओके। सो मेनी विद इन द कांग्रेस रिफ्यूज टू बॉयकॉट, दे रिफ्यूज टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस विच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर 1920। उनको लगा अगर हम लोग ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाएंगे, एंगर में आ जाएंगे। वाई? बिकॉज अगर इंडियंस ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम लोग क्या ब्रिटिश को सिलेक्ट करें, ऐसा। एंड व्हाट गांधी जी वांट इज़ लाइक हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके। सो देयर वाज अ फियर ऑफ पॉपुलर वायलेंस, द कांग्रेस वाज फेसिंग अ फियर ऑफ पॉपुलर वायलेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हो जाएगा। इसकी वजह से दे आर नॉट बॉयकॉटिंग द काउंसिल इलेक्शंस विच वॉज गोइंग टू हेल्ड इन नवंबर 1920, okay. So with lots of ups and downs, finally in December 1920, in Nagpur session of Congress, non-cooperation movement was adopted. A properly non-cooperation movement was adopted, okay. So this was the thing, how non-cooperation movement started, why non-cooperation movement. So you guys can have a question such as name two brothers who led Khilafat movement. This question is only for 1 marks, guys, okay. After that, why Gandhiji took up the Khilafat issue, okay. So why Gandhiji took up the Khilafat issue, why Khilafat movement was formed, okay. So Khilafat issue क्यों हुआ? ऑटोमन टर्क से हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनको लगा कि उनका जो हेड है खलीफा वो एक हार्श पीस ट्रीटी साइन करने वाला है, वो पीस ट्रीटी ना साइन हो, इसकी वजह से वो मुस्लिम्स कमेटी ने क्या हुआ, अपना एक अलग से कमेटी बनाया, खिलाफत कमेटी बनाया। वो खिलाफत कमेटी में उन्होंने क्या किया, वो खिलाफत कमेटी की जगह उन्होंने फिर वो प्रॉपर खिलाफत कमेटी की जगह उन्होंने क्लीन एंड क्लियर वहाँ पे बताया कि हमें खलीफा को कैसे डिफेंड करना है। सो उसके साथ साथ वो खलीफा का पीस ट्रीटी नहीं मानना था, इसके वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ कोलैबोरेट किया एंड गांधी जी एंड बोथ डिस्कस्ड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। आफ्टर दैट उन्होंने कांग्रेस, जो भी कांग्रेस के दूसरे लीडर्स हैं, दे एक्सप्लेन देम, दे convinced them, and after that they convinced them to struggle against and to start a movement against Khilafat as well as Swaraj.